Okay, first of all, guys, very good evening for today's session. So, पहले हम this session would be all in Hindi English mix so that you are able to know the complete knowledge about this course. So, I'll give an overview within 2 or 3 minutes so that Manish also able to understand what it is all about. So basically अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो after the completion of course you would be able to do three different type of aspects. The number one is if you are willing to open your own agency, you are willing to become self-employed in future, you are like you have the intentions of opening a small business or a large scale or a mid-sized business, you can do so. Visa industry is very vast. You can choose your portfolio. आप इसमें student visa, आप इसमें ट्रैवल वीजा, आप इसमें पीआर वीजा, आप इसके अंदर वर्क वीजा, ये सारी सेगमेंटेशंस होती हैं। आप इसमें अपना पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग आप अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे, स्टूडेंट वीजा से स्टार्ट अगर करें तो स्टूडेंट वीजा के अंदर आप सीखोगे सबसे पहली चीज की यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप कैसे किया जाता है। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब हैं जो एडमिशन्स देती है बच्चों को, उनके साथ टाई अप कैसे किया जाए। सेकेंडली आप ये चीज सीखोगे कि टाइप्स के बाद एडमिशन की एलिजिबिलिटीज को स्टूडेंट के लिए कैसे मीट कराया जाता है, अल्टरनेटिव वेज क्या है। स्टूडेंट्स की काउंसलिंग आप यहाँ से सीखोगे कि किसी बच्चे की स्टूडेंट की काउंसलिंग आपको कैसे करनी है। इसके अलावा आप यहाँ से सीखोगे कि एडमिशन का जो प्रोसीजर्स होता है उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें सीखोगे। वीजा का एप्लीकेशन आप सीखोगे कि कैसे स्टूडेंट वीजा को अप्लाई किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। उसके अलावा आप सीखेंगे कि आफ्टर गेटिंग द वीजा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, फिर आपका कमीशन जो होता है वो कैसे जनरेट होता है। ये सारी चीज आप स्टूडेंट वीजा में सीखेंगे। वर्क वीजा के लिए आप सीखेंगे कि वर्क वीजा के अंदर कैसे आप डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करते हैं। आपको जेन्युइन वर्क परमिट्स जो वैसी कंपनीज को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए जो जेन्युइनली आपको आपके कस्टमर को आपके क्लाइंट को वर्क प्रोवाइड कर रही हैं। आप इसमें सीखोगे कि वर्क मिलने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं वर्क परमिट को मिलने के बाद वर्क वीजा में कन्वर्ट कराने के लिए। इस चीज को समझोगे कि वर्क परमिट क्या होता है और वर्क वीजा क्या होता है। वर्क इसके अलावा आप इसकी प्राइसिंग सीखेंगे कि आपको अपने क्लाइंट को कैसे मैनेज करना है, क्या प्राइसिंग आपको रखनी है, क्या मैक्सिमम प्राइसिंग रख सकते हैं, क्या मिनिमम प्राइसिंग रख सकते हैं। इसके अलावा आप टूरिस्ट वीजा में जो हम अभी कवर अप कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा में सीखोगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीजा, जैसे आई एम सो सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ फॉर्मेट चेंज होता है, तो हर एक कंट्री के फॉर्मेट को आप कैसे सीखोगे। ट्रैवल वीजाज, अब ट्रैवल के अंदर भी आप दो चीजें सीख सकते हैं। एक चीज होती है कि आप एक ट्रैवल एजेंसी जो पैकेजेस बना के बेचती है, जैसे स्पेंड 3 नाइट्स 4 डेज इन सिंगापुर और दुबई और 9 डेज, ऐसे करके ट्रैवल पैकेजेस आप सेल आउट कैसे करने हैं। उसके अलावा आपको सीखोगे कि सिर्फ वीजा का काम कैसे करना है, उसके अंदर सिर्फ ट्रैवल वीजास कैसे इशू करने हैं। इसके बाद आप एक और चीज एट लास्ट जो होगी वो इसके अंदर वो होगी कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद इसको कैसे बढ़ाना है। और उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, दे वांट टू बी एम्प्लॉयड, तो बिस्मा यू आर चेकिंग आउट योर बैकग्राउंड। सो उस कंडीशन में आप उस कंडीशन में कैसे आप जो वीजा है, आई एम सो सॉरी वेयर वाज आई, माय फोकस वाज ऑन बिस्मा चेंजिंग हर बैकग्राउंड। You were saying that what all countries. या Yeah. what all countries application, and after that for people who don't want to get self-employed or don't want to open their consultancy, or in that condition we'll provide you, after this course we'll provide you 100% assistance with the relevant companies that are actually hiring people with this sort of knowledge that you will acquire after doing this course। ये कोर्स करने के बाद जो आपको नॉलेज आएगी, हम आपको ऐसी कंपनीज को रेफर करेंगे जो ऐसी नॉलेज को ढूंढ रहे हैं, और यू कैन अर्न अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योरसेल्फ। बाय द वे, मुझे नहीं लगता इस कोर्स को करने के बाद कोई बेसिकली वर्क की तरफ फॉरवर्ड करेगा। बेसिकली उनकी फर्स्ट अप्रोच यही होगी कि हम अपना काम खुद का काम शुरू करें। ओके,
No worries. Let's start the classes. In the previous classes, we have already completed Singapore. सिंगापुर के हमने बेसिकली वीजा का फॉर्म फिलिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं कि वीजा सिंगापुर के लिए वीजा फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। वीजा सिंगापुर की डॉक्यूमेंटेशन हम सब समझ चुके हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन सिंगापुर के लिए रिक्वायर्ड है। एंड थर्ड थिंग इज इसके अलावा जो आपको तीसरी चीज की जो जरूरत है, जैसे सिंगापुर का जब ये एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन या वीजा आने के बाद कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है इन बिफोर अराइविंग दैट सिटी, दैट इज द अराइवल कार्ड। तो सिंगापुर जाने से पहले आपको वीजा मिलने के बाद भी आपको अराइवल कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो ये चीजें आप सीख रहे हैं यहाँ पे, और ये इसी को आप आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जो भी हमने अभी क्लासेस में कवर किया है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने कवर की थी कि सिंगापुर का वीजा का प्रोसेस है क्या। तो ये आई गेस आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम मयंक। मयंक, क्या है सिंगापुर का वीजा का प्रोसेस टूरिस्ट वीजा के लिए? टूरिस्ट वीजा के लिए सबसे पहले तो जो ट्रैवलर है उसको क्या खुद पहले वो जो है अपनी तरफ से सेल्फ अप्लाई नहीं कर सकता। ही नीड टू फाइंड अ जेन्युइन यू कैन से द ट्रैवल एजेंसी फॉर द सेम। he need to connect with them and he need to ask for the visa. He need to give all the information about his traveling details and all. और फिर उसके बाद क्योंकि जो ऑथराइज ट्रैवल एजेंट्स हैं, इन एजेंसीज हैं इनफैक्ट, वो ही उसको अप्लाई कर सकती हैं ट्रैवलर के लिए। ठीक है। करेक्ट। नेक्स्ट। एंड देन उसके बाद फिर जब वो अप्लाई के लिए आता है उसको अपनी सारी इंफॉर्मेशन वो देता है। देन वी नीड टू डिटरमाइन what in which category the traveler falls in, like if the person is an employee of a particular organization, if that person is a self-employed person, or if that person is a student। तो फिर वो जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है उस हिसाब से फिर हमें प्रोसीड करना होता है। और दो मेजर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड टू अ पर्टिकुलर एम्बेसी और अ कॉन्सुलेट। वन इज द ओरिजिनल पासपोर्ट एंड द वीजा फॉर्म। ओके। तो ये सो दोनों चीजें एम्बेसी या कॉन्सुलेट पर चलती हैं। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू मैंक एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर, आपका जो पासपोर्ट होता है and the visa form, it's a e visa, though it's a e visa, yet आपका जो यस। पासपोर्ट है इट इज सबमिटेड टू कॉन्सुलेट। और वो कॉन्सुलेट किस चीज पे डिपेंड करता है? आपके जुरिस्डिक्शन पे। आपके जुरिस्डिक्शन पे। अगर नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के लिए जो जुरिस्डिक्शन बनता है दैट इज इन न्यू दिल्ली। जो सदर्न इंडिया के लिए बनता है दैट इज इन चेन्नई। एंड जो ईस्टर्न इंडिया के लिए बनता है दैट इज इन कोलकाता। कोलकाता। ईस्टर्न इंडिया के लिए कोलकाता है, एंड वेस्टर्न इंडिया के लिए मुंबई है। मुंबई। तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट जाता है, और वो ट्रैवलर को खुद जाने की जरूरत नहीं होती, उनको बस अपना पासपोर्ट कॉन्सुलेट ऑफिस में भेजना पड़ता है। यस। यस। ठीक है, आपके जो ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी होगी जिसको भी आप हायर करते हो इस प्रोसेस के लिए, आप उनको अपना पासपोर्ट भेजते हो। ठीक है, और आपको एक ई वीजा आता है। तो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जब हम ये चीजें कर चुके हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वीजा का एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, वीजा का फॉर्म सबमिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें जानना है कि वीजा आता कैसा है। अब देखना चाहोगे कि सिंगापुर का वीजा कैसा आता है? ओके, जस्ट अ सेकंड। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आई गेस इट्स विजिबल, राइट? This is the kind यस। of e-visa that you will receive once your visa gets approved. तो उस ई वीजा में आप ये देखिए, आपका ये इफ यू कैन चेक दैट इट इज अ रीसेंट वीजा इशूड। इट वाज इशूड इन 12th of August 2024, 2 days ago it was issued। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, प्लीज डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो क्या होता है, ये ई वीजा नंबर होता है, आपका नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है आपका, जो भी है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, नेशनैलिटी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, वीजा इशू डेट, एंड देन आपका वैलिडिटी, टाइप ऑफ वीजा,
like in this case, it is multiple journey. Remarks and the visa issuing authority, जिन्होंने visa issue किया है, that is SPG Consulate General in Chennai. SGP stands for Singapore. Singapore Consulate, which is based in Chennai. Why it is issued in Chennai? What is the reason it is issued in Chennai? Nitin, what is the reason why it is issued in Chennai? Because that person located in southern part. Okay, correct. So the person was located in Kerala. That's the reason. Okay, so I'll. I guess you got to know how the visa looks, right? Now, after getting the visa, what we need to do? What is the next procedure? Surya, would you like to tell me what's the next procedure after getting the visa? The one is arrival card. Before 3 days, we need to apply, Okay. So and can the cover yeah, letter required. and the Cover letter, yeah, that what is for the visa, I think. the cover letter is not required. If you get the visa, then why you require the cover letter? Uh, Cover letter is required when you are applying for a visa. Once you get the visa, there is no requirement of the cover letter. Only arrival card is required. And how would you apply for the arrival card? We'll do it in this class. Okay. So in this class, we'll do two things which are very important, because in the previous class, we have completed how to write a cover letter. But I guess you were a little bit confused in writing a cover letter. Maybe I have sorted out your problem, but today I'll give you a practical example how to write a cover letter with ease using technology. You don't need to input a lot of efforts from yourself. You just need to be a little bit creative. You can input your words. So first of all, I'll show you how to apply a arrival card, and then we'll do the cover letter, and our Singapore would be done. Rest one thing would be there, and the only thing would be how to do the counseling of a person who is traveling to Singapore, and how to earn money, and how to earn money out of it, because you guys are there for money, right? Everybody is here for money. So how to earn money? Okay, now just a second, I'll share my screen and then we'll start. Please mute yourself if you are not speaking. I said mute yourself if you're not speaking. Who's this? Yeah. Okay. My screen is, I guess it's visible, right? Okay. So the first thing that you need to do is go on Google, type Singapore High Commission, or you can type Singapore Embassy, whatever you feels like. It'll take you to this authentic website of Singapore, that is www.mfa.gov.sg. Okay, and the important thing is, wherever there is .gov, understand this point that it is an authentic website. Okay, I'll click on this website, and now here you can see that we will start applying for a, okay, it's showing us New Delhi. We'll open the general website. Just a second. Okay, so we are into the government website of ica.gov.sg. That website was for Indian customers, like that's for Indian embassy, which is located in, sorry, that is for Singapore embassy, which is located in India. That is the website of theirs. Now, this is the website which is in Singapore.gov.sg. SG stands for Singapore. Okay. Now, on the very first page, you will find submit the SG arrival card.
Singapore arrival card. On the very first page, on the very beginning, you will find it. All you need to do is you just need to click on that. Okay. Now, here's an option called submit online. All we need to do is click on submit online. When we are clicking on submit online, it's giving us three options: submit SGAC, update SGAC, or retrieve electronic pass. See, electronic pass is not for us. So electronic pass, what do you mean by electronic pass? Electronic pass means the country's resident, the passport holders of those countries which do not require a visa to enter Singapore, they need to have a e-pass. So they can have directly the e-pass. There is no need of visa for them, like the passport holders of Australia, passport holders of USA, Canada, Schengen countries. So they just need to have, they don't need to have a visa, they just need to have an e-pass. So they can apply that. What do you mean by submit SGCs? The form to submit the arrival card. And it is the form to update the arrival card. Update means if something, while filling up the form, if some mistakes were done, last name was there is a change in travel dates. So in that scenario, you can update it from it. Now we'll click on submit SGAC. Now it is showing us three options for Singapore citizens, PR. So you don't require long-term pass holders. So we are as a foreign visitors. So we'll apply on foreign visitor. Now it is opening a form to us. Now the only thing that I have informed you in the class as well, that this arrival card would be applied only 3 days prior to your visit, right? So it can be only if you are visiting on 16th of August, 15th of August, or 14th of August, then only you can apply it. Otherwise, it will not give you an option to apply for the visa. Got it? I guess it's clear till now. So let's say we are going on 16th of August. So I've selected 16th of August. Now it is giving us two subsections that we can retrieve all the fields would be automatically filled if you will retrieve through your visa. You have already got your visa. That is the reason you are applying for arrival card. So when you will click and put your visa reference number and your passport number, all these details would be automatically filled. And this is a very good thing. You can even check, like if somebody issued a visa and you want to check that whether it is a valid visa or not, they are not bluffing you around or not. So you can check it here. You can just need to put the visa reference number on there and the passport number, and you can check if the details gets automatically filled. That means it is a valid visa. Got it till now? The other section is retrieve with passport. In this section, like you just need to upload your passport, and then it will autofill these information, whatever information it is required. In the third section, you can put it manually. As we are doing a dummy section, so that's the reason we'll do it manually. So whatever the full name on the passport, you just need to put that according to the passport. If your passport contains middle name, then you need to put middle name as well. If your passport contains only contains a single name, then you need to put a single name. According whatever your passport mentions, the name section, you can need to put that. Okay. And one more question, as you guys are attending classes, so I want to ask Nitin. Nitin, what while applying the Singapore visa, if some person doesn't have a last name, what do we put in the visa form in the last name? Only single name. If we have like a middle name or last name, we will add the entire name. No, I'll repeat the question. The question is, if there is no last name on the passport, and if you are applying for the Singapore visa, so in the visa form, what you will put in the last name? We will just enter the name, single name only. If we doesn't have any. Yes, we'll put the first name only in the last name section. Got it? Okay. Now moving forward.
So the name was Nitin Kumar and the passport number was X1234567. The passport expiry was in 11th of October 2032, and the sexual orientation is male. Date of birth is let's say 10th of June 2020 2000. Nationality is Indian. The country of place of birth is India. The place of residence. So here you need to type the city in which you are living. Let's say you are living in Kerala. So Kochi, correct? If you are from Delhi, you need to put in the place of residence as Delhi. So it will automatically pick that particular section. Okay. If what say if you are telling that you are living in Ghaziabad, right? Uttar Pradesh. What is the spelling of Ghaziabad first of all? GHAZIA. It's not picking up Ghaziabad. So Uttar Pradesh, right? Uttar Pradesh. yes, it's picking up UP. This is how you need to do it. Okay. Now in the email address, the email address of that particular person whomsoever visited, in the country code, you know already, +91, and in the uh, phone number section, you just need to put the phone number of the person. Now the next question is asking, have you ever used a passport under different name to enter Singapore? Obviously no. Now, do you currently have fever, cough, short of breath, headache, vomiting, or rash? Important. So just need to put no. Have you ever visited the listed countries in Africa or Latin America in the last 6 days prior to your arrival in Singapore? No. Why they are asking you this question is because yellow fever is actually very common in these countries, Latin America and Africa. So if you have traveled in past 6 days, so there are possibilities that it can contaminate others as well. So that is the reason. In add traveler, you can add if you are going with your family, like if your wife is also visiting with you, if your children are also visiting you, so same form you can fill for them with the same arrival, like they'll get the arrival, they also get the arrival craft for here. So for if there are four travelers, like four people are going, you just need to click on add more traveler at the bottom, which is showing add traveler. Okay, clear till now? For now I'm just removing because we are just learning. So no, traveler one is already added, Nitin is added here. Now I'll click on next. The moment I'll click on next, it will take me to the trip information and the last city or the port of embarkation before Singapore. So what would be it would be? It would be the airport from which you are flying. If you are flying from Delhi, you just need to put Delhi. And if you are flying from Kochi, you need to put Kochi. Whatever the destination is, you can select it from here. And again, you need to select the purpose of travel. What is the purpose of travel? What visa have you applied for? What visa you got? Traveler visa. And what you will do with the traveler visa? Yeah, as a tourist, we will go, visit places. You will do holiday, sightseeing, leisure. Holiday, sightseeing, leisure. Yeah. This is what you're going to do with the visa. So we'll just Yes. select holiday, sightseeing, leisure. Mode of travel, whatever your mode of travel is. So it will be air, right? And it will be a commercial flight or private cargo airlines or others. What you will choose here? Private. Correct. Commercial flights are for Cargo and correct. Commercial flights are for cargoes. So carrier name or flight number, you can see if why the reason they are asking for such details, because after 3 days you are traveling to Singapore, and if you have not done your booking, flight booking or all that stuff, so how they can issue you the flight and all, so the arrival card. So that's the reason you can put the carrier name as well. Like in this case, Airbus 360, I'll put. Not importantly, you just and the flight number you can get it from your
from your the ticket, the flight ticket, you can get it from there, right? So Airbus 360 you need to put in the type of accommodation in Singapore, whatever accommodation you're gonna be residing in, would it be hotel, residential, or others? You just need to, if you are residing with a family, friends, so you can just put others, and you can put day trip, and in that section, that's it. Others means you are traveling to a friend or somewhere like that. In residential, others basically, I'm so sorry, there are difference, I'm so sorry. Residential is when you are visiting with your to a family member or to a friend. Here you need to put their complete address. Others is for people who have a transit in Singapore. What do I mean by transit is, if somebody is going to Australia, let's take an example. If somebody is going to Australia, if somebody is going to Australia, in that case, if he doesn't have a direct flight, then he is taking a flight which will connect in Singapore. So in that scenario, he may have layover time. So layover is when there is gap between his connecting flight. Got it? So when there is time between his connecting time, so plan to he may plan to what? To rest. So he can take some locations to rest. Okay, so the type of accommodation is in Singapore others, and we have selected transit. So transit means he have a layover and he wants to rest. In other section, so why arrival card is required? Let's say you, I'll take an example. If somebody has a visa of Australia, so he has no intention to go to Singapore, but he booked a connecting flight, like because connecting flights are cheaper. So he booked a flight from Delhi to Singapore, and then from Singapore to Sydney, right? Now, the flight which is from Singapore to Sydney has a layover time of 12 hours. Now, he plans to like enter Singapore in 12 hours. He wants to explore Singapore, so he have time to explore. So the person thinks that he'll go and explore Singapore in those 12 hours. So in that condition, he have to have a arrival card. So he can get a arrival card by just putting the transit here, and he can get it, right? Similarly, if the day trip stands for when the person is only going in Singapore for 24 hours, is not going more than that, then there is no requirement of the address. There is no requirement of the address in day trip and transit, because you are only residing less than 24 hours in Singapore. So you just need a arrival card, but you don't required to put your accommodation address here. In the hotel section, you will just need to put the name of the hotel, whatever the name of the hotel is, and you need to put the date of departure. Date of departure means when you are leaving the hotel. So 16th he is going to the hotel, and on 19th he is leaving the hotel. Now the next city or port of disembarkation after Singapore. That means what city you would travel after Singapore. Let's say, just I give you an example. If somebody wants, after Singapore, he wants to go to Malaysia as well. He doesn't wants to come to India. In that condition, he can mention here Malaysia. If he is coming back to India, in that condition, he needs to put India, Delhi, back to India. Right? Clear till now? So this is the basic information that needs to be put. We'll click on next. The moment we'll hit next, it will ask us to review. Now, after reviewing, all we need to do is I have read and agreed to the declaration, and I'll click next. Now it will send a security verification text. I'll just need to enter that, and I'll click submit. The moment is I put it, it says your Singapore arrival card submission is successful, and you will get the acknowledge by on your email. You can download it from here. Let's download it, and I'll show you how it looks like. Thank you for using this Singapore. This Singapore is only valid for one-time use for travel on the expected date of arrival. And here is the detail of the arrival card. This is what the arrival card is.
You just need to take a printout of it and give it to your client. Okay. Now, any questions so far related to Singapore? Anything? Any questions related to Singapore? Because we have almost completed Singapore. The only thing which is remaining is to practice you the cover letter, and the second thing is how to get clients. Rest, the application process and everything related to Singapore. Any questions related to it? No? Should we proceed ahead? Okay. Now, the second thing is, after doing this, so I was telling you guys that after completing this, I'll be telling you how to develop the Singapore cover letter. Yesterday in the class, I've already completed the cover letter section, but now in this class, I'll give you few more examples. The easiest possible ways to create multiple cover letters is the option called Chat GPT. Aware of it or not? If you haven't used it, start using it. Okay, so I'll share my screen, and I guess it's visible. Yes. Okay, all you need to do is you just need to put the information which is required. Okay, let's take different kind of scenarios from you guys. I'll take from Manish. Manish, we want to write a cover letter, and what is the scenario that you give me, that for whom should we write a cover letter? Like, what is the condition of writing a cover letter? Who wants to travel? So then we'll write a cover letter. I mean, you're asking whom it should be addressed. No. I'm asking the condition. So if I guess you are new to the class, let it be Manish. I'll ask you later. Generally, Mayank. I'll just try my best. In the cover letter, you need to mention about yourself. What is the purpose of your visit to that particular country? The duration of stay you want to stay there, including your passport details and all. Yeah, that is correct, man. That is completely correct. But what I'm asking is that you give me a condition on which we need to write a cover letter. Condition means, like, there are two people who wants to go. Out of one is student, the other one is working. Like such conditions, so that we can write a sample. I'll make you understand how to write cover letters for different situation. So Mayank, would you like to give me a situation? Well, situation is like, suppose if someone is traveling for like a student. If a student wants to travel with with his uh, relative, then how we can write the cover letter? Okay, so the condition is that two people are visiting. Yeah. Uncle is visiting, and with the uncle, uh, his nephew is also visiting. His nephew is a student in a Yes. college, and uncle is a salaried person. He is working as a government employee in Department of Home Affairs. Any situation, right? So let's what you need to do is just type the situation, whatever it is, on the uh, Chat GPT. So I'll write the situation as cover letter for two people visiting Singapore. One is a student in a college, and the other is a government employee. A government employee. They want to travel for 5 days from 16th August to 21 August. Let's enter it. Okay. Let's see what it shows.
Okay, so it shows, first of all, we need to write it to, I've just informed you in the previous class, High Commission Singapore. So don't copy Consulate General of Singapore. You can type Consulate General. You already know the format and it is covered in the previous class. If you want to take the format, you can ask me, I can send it to you. Okay. Now in the subject, it says visa application for travel to Singapore. That's mandatory. Dear sir, madam, I'm writing to apply for a visa for 2 individuals who wish to see. This answer is according to what you have written. So what you need to do is you need to change it according to your condition. So I am writing to apply for visa for myself and my nephew. We want to travel to Singapore for a short visit. The details are as follows. Travel dates from August 16 to 24, duration of state fighter. Traveler's name is, date of birth. The traveler name is, first of all, you'll put the name of the student here, the government employee name, date of birth, passport number, institution, his college institution name, his student ID card, and his government department and employee ID card. We are planning this visit to explore Singapore rich culture, heritage, and enjoy its renowned attraction. Our itinerary includes visit to places of such as Marina Bay Sands, Sentosa Island, Gardens of the Bay. This trip is also provide an opportunity for us to experience Singapore's vibrant culture and hospitality. The primary purpose of our visit is tourism. We have made arrangement for accommodations at this particular hotel, and we have planned our travel itinerary to ensure a well organized and enjoyable visit. We have sufficient funds to cover our stay and all assured during our trip. Attached our bank statement, travel insurance documents, and proof of booking for our reference, and supporting list of supporting requests. Last thing, we kindly request you to grant us the necessary visa to facilitate our travel to Singapore. We sure that we'll adhere to all regulation and guidelines. Yours sincerely. So was it easy? All you need to do is just type the situation, get a framework, and change the framework according to your client. Easy or not? All you need to do is just type those situation, whatever it is. Because see, you can write it. I have in the previous class, I have mentioned you what needs to be answered in the cover letter. If you are answering the cover letter according to what I mentioned, it will be also okay. But if you want to lesser down your pressure, use this Chat GPT. In Chat GPT, all you need to do is get the framework, mold the framework according to your requirement, and just paste it off. Don't need to write this headings. Just make sure you are not writing these headings: travelers, purpose of visit, or financial arrangements, supporting documents. Just make a different column for everything. Like after purpose of visit, just start, we have sufficient funds to cover in the next paragraph. Don't make headings there. Okay, any doubts till now? No. Now, are you able to write any sort of cover letter? Any sort of cover letter using this? You can write it, right? No problems till now? Please ask question, guys. If you have questions, you should ask it. No questions? Okay, No. wonderful. Wonderful. Okay, now अब हम बात करते हैं, पूरा हो गया वीजा, सिंगापुर का वीजा आपको पूरी तरह से आ गया, हर डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार करना है आपको आ गया, फाइनेंस कैलकुलेटर की मदद से बैंक स्टेटमेंट्स को कैसे डेवलप किया जाएगा आपको आ चुका है, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन आ गए, वीजा का फॉर्म सबमिट करना आ गया है, वीजा का प्रोसेस आ चुका है, राइट और रॉन्ग? इसके अलावा आपको एक ऐसी वेबसाइट भी पता है जिसके ऊपर आप बिना किसी ट्रैवल एजेंसी की मदद किए हुए आज से ही सिंगापुर का वीजा अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास क्लाइंट आए तो, करेक्ट? अभी नेक्स्ट चीज आती है कि आज से काम करना शुरू कैसे करें, हाउ शुड वी स्टार्ट वर्किंग फॉर सिंगापुर? सो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको चार्ज क्या करना है. देखिए, सिंगापुर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो सिंगापुर की जो एवरेज कॉस्टिंग है, जो आपको कल प्लेटफॉर्म मैंने दिखाया था, आई विल शेयर टू यू अगेन. Minor cover letter. What do you mean by minor cover letter, Bisma? Like, is it a minor small? who is willing to visit. I didn't get you. A minor who is willing to visit to the Singapore.
same thing, Bisma. If you just need to go to Chat GPT and you just need to enter it. But again, as I've informed you in the previous classes as well, a minor who is visiting, if he is below 12 years of age, if he is visiting alone, so basically he cannot he cannot travel alone, first of all, because a flight, he needs to apply for a flight representative who can be with him at the time of application. The second thing is, there should be a relative with him if he's younger than 12 years old, if he's visiting to some place. Third thing is, in few countries, if someone is below the 12 years of age, they are not even allowed to travel. For in the case Dubai, if somebody is traveling, if he is below the age of 12 years, he cannot travel. He should have his parents with him. And if his parents are not going, his uncle or auntie is going, in that condition, he had to take an NOC from the parents, no objection certificates from the parents, that needs to be uploaded while applying the visa. So cover letter of a single person is never written in the case of Singapore. Understand this point. In the case of Singapore, if 5 people are traveling, a single cover letter is written for all the 5 people. If 2 people are traveling, a single cover letter is written for 2 people. So if you are asking for a minor would never visit Singapore alone, first of all, if he is below the age of 12 years. Now, if he's above the age of 12 years, is between 12 years and 18 years, then he need to have a NOC, no objection certificate from his parents. He cannot travel without no objection certificates from his parents. I guess it's clear. Okay, moving forward. So Sir, I have a question. Actually, suppose if we have, contracted with a particular college or a school, right? And, we have a tie-up with that particular institute, and, through our agency, that particular institute wants to, plan their whole travel. So how we prepare the itinerary in that case? very basic is, you can, first of all, you can use, first thing is, you can, there are multiple websites like Make My Trip and other websites that gives you a prepared itinerary, first thing. Second thing is, you can use Chat GPT as well to prepare the itinerary for a group visa for Singapore. Third thing is this, you can explore by yourself. You can go on Google, you can type like famous destinations to travel in Singapore for kids. You'll write, it will show you like what all destination. What is itinerary? Itinerary is just a planned document that shows you, that is an overview where you will visit in Singapore. वो दिखाएगा कि आप कहाँ कहाँ विजिट करना चाहते हो. तो ये तो आपकी रिसर्च, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी. आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे कर सकते हो, वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप उन पे जाके, मेक माई ट्रिप है, और एक ट्रैवलर ब्लॉग करके कुछ है, बहुत सारी वेबसाइट्स, आप उन पे जाके यात्रा एक्चुअली में ये, वगैरह है। हाँ, यात्रा वगैरह हैं, आप वहां पे जाके इनकी आइटनरीज निकाल मतलब सकते हो. कहने का मेरा मतलब ये है कि हम मतलब आज ही से ही अगर हम चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट को भी हम अप्रोच कर सकते हैं फॉर करेक्ट, आवर ट्रैवल. करेक्ट, बिल्कुल आप कर सकते हो. सबसे पहला स्टेप, अगर आप इस तरह की अप्रोच करना चाहते हो, इस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सबसे पहले थोड़ा सा रिसर्च करना है और एक अच्छी सी आइटनरी बनानी है जिसके अंदर आप एजुकेशन के जो डेस्टिनेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स, म्यूजियम्स, इन सबको थोड़ा सा इंक्लूड करना है उसके अंदर, अपनी आइटनरी के अंदर. फन तो है ही, जैसे डिज्नीलैंड है, तो डिज्नीलैंड इज फेमस, तो डिज्नीलैंड के अलावा आपको बाकी ऐसी चीजें भी इंक्लूड करनी है, म्यूजियम्स हो गए और कुछ ऐसी चीजें जहां पे विजिट करके किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल को फायदा होता, मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट जिसको आप ऑफर कर रहे हो, उसके डिपेंडेशन, उसकी आइटनरी को प्रिपेयर करने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट अ लमसम अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी अमाउंट का, पहले किस चीज की, कि कौन कौन सी कॉस्टिंग्स आएंगी इसके अंदर. अगर उनका पहले स्टे पीरियड आप कितने दिन के लिए बना रहे हो, आपने ये डिसाइड कर लिया, लेट्स से यू डिसाइडेड फॉर 3 nights and 4 days, आपने डिसाइड किया 3 night and 4 days का आएगा. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आइटनरी प्रिपेयर करने के बाद 3 night 4 days का एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना. सबसे पहले, जैसे मैंने आपको वेबसाइट्स बताई थी, कौन कौन सी, जिसके अंदर आप होटल बुकिंग कर सकते हो, बताया था ना मैंने आपको. तो उन वेबसाइट्स पे जाना है और उन वेबसाइट्स पे जाने के बाद एक
एवरेज कॉस्ट निकाल के लेके आनी है कि एक अच्छा खासा होटल 3 स्टार और 4 स्टार का एवरेज प्राइस क्या है। तो आपको पता चल जाएगा इस प्राइस के अंडर मैं यहाँ पे ये एक दिन के लिए मेरे को होटल मिल जाएगा। उसी के अंदर आपको एक और चीज है, अगर आप ग्रुप वीजा को करने का सोच रहे हो तो आप होटल्स को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी या फिर मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो इस तरह का प्लान कर रहे हैं। हम अक्टूबर के लिए हम स्कूल की विजिट प्लान कर रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो आप हमारे लिए जो मैक्सिमम जो जो रूम्स हैं वो कितने प्रोवाइड कर सकते हो और क्या उसकी कॉस्टिंग रहेगी। आप मुझे मिनिमम जो भी आपका आप अपनी तरफ से डिस्काउंटेड रेट दे सकते हो वो दे दीजिए। तो वो डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। एवरीबडी नीड्स कस्टमर, इस चीज को समझो आप। तो वो आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। अगर फिर भी आप एक सिर्फ ओवरव्यू के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो आप वहां से एक एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। एवरेज कॉस्ट निकालने के बाद 3 डेज से आप जितने भी दिन वहां स्टे करने वाले हो उस डेज को वो कर लीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप इज टू हायर पीपल हु आर इनटू दिस ट्रांसपोर्ट। तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ऐसी एजेंसीज मिल जाएंगी। इवन आपको डेस्टिनेशन कंट्रीज भी मिल जाएंगी। डेस्टिनेशन कंपनीज का मतलब मेरा ये है कि जो ये पूरी ट्रैवल प्लानिंग करती हैं, आप डायरेक्टली उनसे पैकेजेस खरीद सकते हो। उनको आपको सीधा ये बोलना है कि देखो फ्लाइट टिकट्स और वीजा मैं खुद मैनेज करूंगा। आप उनको कंट्री में लैंड होने के बाद उनका होटल, उनकी साइट सीइंग, इन सबको आपको मैनेज करना है। तो वो आपको एक प्राइस दे देंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो उन कंपनीज क्योंकि को आप जैसे कई कंपनीज होती है जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, डीपॉल वगैरह हो गए, और भी तो वहाँ पे वो यही होता है कि मतलब एक जो एजेंट है वो सारा सब कुछ उसमें मैनेज करते हैं, दे ट्रैवल साइट सीन्स एंड एवरीथिंग, वीजा राइट्स। वो कस्टमाइज कर सकते DMCs हो। होती है, डेस्टिनेशन हाँ मैनेजमेंट। ये मेरा एक क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ हेलो। देखिए एक सेकंड सूर्या, आई आंसर मयंक्स क्वेश्चन। मयंक, उस कंडीशन में जो आप बोल रहे हो कि वो पूरा देते हो तो आप उनसे कस्टमाइज करा सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मुझे वीजा और फ्लाइट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वहां पे जब लैंड हो जाए उसके बाद वो देंगे, बिल्कुल आपको देंगे। उनको हमसे मतलब है, उनको इस चीज से मतलब है, उनको पैसा तो कहीं ना कहीं से जनरेट हो रहा है। और इवन जब आप उनको ये बताओगे ना कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी हूँ, मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ, तो वो आपको B2B रेट्स देंगे, बिजनेस टू बिजनेस रेट्स देंगे। क्योंकि उनको ये पता है इन्होंने, अगर हमने उनको अच्छी सर्विस इस टाइम दी है तो ये नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएंगे तो ये हमारे पास ही आएंगे। तो ये एक माइंडसेट से वो आपको जब अप्रोच करते हैं, तो फिर आप उस माइंडसेट से जब अप्रोच करोगे तो आपको जेन्युइन रेट मिलेगा। और जैसा कि मनीष ने कहा, वो DMC होती है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये इन कंपनीज को यही बोला जाता है, और इसको आप सर्च भी कर सकते हो। और कुछ इसमें से जो फेमस है उनको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, ट्रिवागो, और भी कुछ ऐसी ट्रैवल ट्रायंगल, कुछ ऐसे करके कुछ कंपनीज हैं जो बेसिकली ये सब देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। आप इनको सिर्फ रिक्वेस्ट तो डालो, विद इन हाफ एन आवर कॉल आ जाएगा आपको, और वो आपको विद इन हाफ एन आवर सारा कोटेशन दे देंगे। अब वंस, ठीक है, आप आंसर हो गया क्वेश्चन। अब एक बार मैं सूर्या का क्वेश्चन ले लूं। सूर्य, क्या क्वेश्चन था आपका? आपने बताया ना, मतलब हम एजेंसी ये कर सकते हैं, मतलब आज से सिंगापुर के मतलब वीजा टिकट का समय हैंडल कर सकते हैं। जनरली एजेंसी को क्या होता है ना, जनरली एंड यूजर्स को कंपेयर किया तो एजेंसी वालों को थोड़ा टिकट का प्राइस में थोड़ा कमीशन कुछ मिलता है ना मिडिल पे। मतलब एग्जांपल, अभी एक एंड यूजर को 15,000 में टिकट मिल रहा है, तो एजेंसी वालों के एक 13,000 में, ऐसा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 2,000 उसको कमीशन जैसा मिलेगा ना। तो वैसा कुछ ऑप्शन मिलेगा हम लोगों को, मतलब हम लोगों को ऑथोराइज करना पड़ेगा मतलब एजेंसी के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको इस तरह के फॉर्मेट में काम करना है तो आप आईटा का जो सर्टिफिकेट होता है, आईटा का जो लाइसेंस होता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है, उसके बारे में हम जब इस चीज के ऊपर आएंगे तब बात करेंगे। फ्लाइट टिकटिंग इज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है। कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ फ्लाइट टिकटिंग से ही मतलब अपना बिजनेस चला रही हैं। उनको ना प्लान्स, ना वीजा की जरूरत है, ना उनको डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज की जरूरत है। वो सिर्फ फ्लाइट टिकट्स में ही बहुत अच्छा मार्जिन कमा रही हैं। लेकिन उसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट है वो, और वो एक सब्जेक्ट आप मेरी एक बात से नहीं समझ पाएंगे। तो वो पूरा एक सब्जेक्ट है, ओके। जब हम उसके ऊपर आएंगे। अभी के लिए जस्ट टू स्टार्ट योर बिजनेस आप ऐसा कर सकते हो, आप ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, जहाँ और जैसे स्काई स्कैनर,
ऐसी वेबसाइट्स का यूज करके या जहां आपको सस्ता प्राइस लगता हो वो बुक कर सकते हो अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए बिजनेस। अगर आप उसके चक्कर में अभी बैठ गए तो योर जो 3-4 मंथ्स का पीरियड है वो आपका ऐसे वाइंड अप हो जाएगा। तो बेसिकली आप अपना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, जब हम उस सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे तब आप उसके बारे में सीख सकते हो। बेसिकली अब मैं आपको जो श्योर बता रहा हूँ बस इतना समझिए कि उसके लिए आपको आईटा का लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसके बाद आपको जो जीडीएस होता है, एमएडएस होता है, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो टिकटिंग के लिए यूज होते हैं। उन सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डायरेक्ट बुकिंग करते हो, तब आपका इस तरह का फॉर्मेट आता है, जिस तरह का फॉर्मेट आप मुझसे जिसके लिए पूछ रहे हो। ओके ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस और शुड आई मूव फॉरवर्ड? ओके अच्छा ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें नेक्स्ट जो चीज जिस बारे में बात करनी थी वो ये थी कि बिजनेस अब स्टार्ट कर रहे थे। मयंक के क्वेश्चन पे थे, सो सॉरी हमने कंप्लीट नहीं किया था। सो मयंक, आफ्टर गेटिंग दी प्राइसिंग, जनरल प्राइसिंग जो भी आपको होती है, उसके बाद आप टिकटिंग का प्राइस निकाल के देखो ईज माई ट्रिप वगैरह से कि एक पर्सन का टिकट का कितना प्राइस होता है, ऑनवर्ड और फॉरवर्ड, मतलब जाने का भी और आने का भी। ठीक है, अब उसके बाद आपका एक एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा कि दिस इज द प्राइस। अब आप वहां पे अप्रोच कर सकते हो ऐसी इंस्टीट्यूशंस को जिनकी आप बात कर रहे थे विद एवरेज प्राइस। उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है उसमें, 10%, 20%, 30%, जो वॉट एवर यू फील लाइक कंफर्टेबल, आप उसमें एडअप करके अब जाओ। और 10% एक और मार्जिन रख लेना। 10% का जो फ्लक्चुएशन मार्जिन होता है, क्योंकि फ्लाइट टिकट्स का जो होता है ना वो मार्जिन चेंज हो जाता है, तो 10% का फ्लक्चुएशन मार्जिन भी रखना, ताकि कल को अगर आप वो अप्रूवल दे दें और उसके बाद फिर आप फ्लाइट टिकट्स चेक करने लगो तो आपको महंगी मिले। एक तो पहली बात, इनको आप करना ही कम से कम एक मतलब 40 डेज, 30 डेज, 40 डेज पहले का ही टाइम देना उनको। ठीक है, उसके बाद आप इसको अप्रोच कर सकते हो। चलो, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करते हैं कि अब अगर हमें ये बिजनेस मतलब अगर वीजा, ये तो मयंक का क्वेश्चन बिल्कुल अलग था। इट्स रिलेटेड टू ग्रुप वीजा एंड इट्स रिलेटेड टू पैकेजेस, जिस पे हम बाद में आएंगे। पैकेजेस को अभी हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनका आंसर कर दिया। अभी मैं बताता हूँ कि आपको वीजा कैसे स्टार्ट करना है, वीजा का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कस्टमर को कैसे लेके आना है, और पैसा कैसे कमाना है। तो आई विल शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। इज इट ऑलरेडी शेयर? नो, No, I can't see your screen. that's okay, I haven't shared it now. एंड प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना तब तक आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ये क्वेश्चंस के ही आंसर्स पे डिपेंड करता है आपको कितना समझ आएगा कितना नहीं आएगा। वीजा इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, जितने ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको उस दिन भी ये प्लेटफॉर्म दिखाया था visator.com, सिमिलरली आज भी मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ visator.com। अभी आपको स्टार्ट कैसे करना है अभी के लिए, एज यू ऑलरेडी नो यू रिक्वायर अ ट्रैवल एजेंसी, सो यू नीड टू स्टार्ट विद visator.com इनिशियली इफ यू वांट टू। और सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको देखना है इन्होंने प्राइस क्या रखा हुआ है। द प्राइस फॉर सिंगापुर वीजा इज 3100 रुपीज। कितना है? 3100 रुपीज। अब इसमें 3100 के अंदर आपको क्या क्या, इस इट्स इंक्लूसिव प्राइस। इंक्लूसिव प्राइस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एम्बेसी की फीस और इसके अंदर इनकी फीस दोनों इंक्लूडेड है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो 3100 ये तो हमसे चार्ज कर रहे हैं। इसके अंदर इसी फीस के अंदर एक चीज समझिए, पासपोर्ट जो है वो कहाँ जाना है? पासपोर्ट जाना है कॉन्सुलेट में, एमबीसी या काउंसलेट। करेक्ट, वहां जाना है ना। अब वहां जाना है तो अगर मान लीजिए आप बैठे हैं दिल्ली में, कस्टमर आपको मिला बेंगलुरु का, तो अब आपका काउंसलेट चेंज हो गया। अब आप खुद तो जा नहीं सकते, पहले तो आपके पास ये, लेकिन पहली बात तो आप वैसे भी नहीं जा सकते बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज ट्रैवल एजेंसी। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा कोई कस्टमर मिलता है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से हर एक कंडीशन में आपको यहाँ से वीजा बुक करना है 3100 रुपीज की कॉस्टिंग में। अब 3100 रुपीज की कॉस्टिंग में जब आप वीजा इंक्लूड करते हो
तो इसमें कुरियर कराना है तो एक और बात इसमें ऐड हो जाएगी कि 500 to 600 रुपीज तो आपके कुरियर के चार्जेस भी तो लगेंगे। आप जहां पे भी हो, एक एवरेज कॉस्ट लेके चल रहा हूं मैं, इतना लग जाता है। हो सकता है 400 लगे, हो सकता है 300 लगे, लेकिन ऑन एन एवरेज कॉस्ट लेट्स से 500 to 600 ले लेते हैं हम, 600 रुपए ले लेते हैं, 600 रुपीज लग रहा है आपका। तो 3100 प्लस 600 रुपीज कितना हो गया? 3700 रुपीज। 3700 रुपीज आपका खर्चा आएगा किसी वीजा को इशू करने के लिए। अब 3700 रुपीज के अलावा जब वीजा चला गया है, तो जब वीजा वहां से वापस भी तो आएगा, पासपोर्ट वापस भी तो आना है, उसकी फीस ये लोग खुद पे कर रहे हैं। इस 3100 के अंदर ये वीजा की फीस, इनकी फीस प्लस रिटर्न कुरियर चार्जेस इंक्लूडेड है। तो सहूलियत हो गई, तो और एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। तो अब 3700 रुपीज के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अभी आपको क्या करना है, बस यहां से बुक करना है। अब सबसे पहले कस्टमर, आपको जो कस्टमर मिल रहा है, तो अब आप उससे कितना चार्ज करोगे, ये क्या फंडा रखना है इसका। इट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन। ऑब्वियसली आप कहाँ रहते हो इस पे डिपेंड करता है। अभी नॉर्थ इंडिया में जो प्राइसिंग है, वो इसके लिए आप अप टू 10,000 to 15,000 के बीच में आप इसके लिए ले सकते हो। सिंगापुर, खाली सिर्फ सिंगापुर वीजा के लिए 10,000 से 15,000 के लिए आप इजीली ले सकते हो। और अगर आपको नंबर गेम खेलना है, व्हाट डू आई मीन बाय नंबर गेम, अगर यू आर एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, तो आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कैंपेन्स रन कर सकते हो और शॉर्ट मार्जिन पे काम कर सकते हो। 500-600 के मार्जिन पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपको वहां ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे फिर, क्योंकि आपसे सस्ता नहीं दे रहा होगा ना कोई। अभी 10,000 रुपीज में या 12,000 रुपीज में आप खाली इसको बेच सकते हो। मैं आपको सिर्फ एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ कि 10 to 15,000 के बीच में आप इसको सेल आउट कर सकते हो, और ये इजिली सेल होता है। सिंगापुर का वीजा इस कॉस्ट में इजिली सेल होता है। एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका, जैसे मयंक ने कहा कि हम इसको एक ट्रैवल पैकेज बना के बेच सकते हैं, तो मैंने ट्रैवल पैकेज का आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। उसमें आपको क्या करना है, अपनी एवरेज कॉस्टिंग्स निकालनी है, और एवरेज कॉस्टिंग सिर्फ दो चीजों की निकालनी है। किस किस की निकालनी है? एक तो वीजा की निकालनी है, प्लस फ्लाइट टिकट जाने की और आने की निकालनी है। जब आप तीनों की निकाल लोगे, उसके बाद अब सबसे पहले आपको क्या करना है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, डीएमसी कंपनीज जो होती हैं, उनको कांटेक्ट करना है। आपको इजीली मिल जाएंगी। आप गूगल पे डीएमसी सिंगापुर भी लिखोगे ना, तो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उन कंपनीज को कांटेक्ट वाया ईमेल भी कर सकते हो और अदर मोड से भी कर सकते हो, और उनको बस ये बोलना है कि दिस इज द नंबर, वी गॉट 10 travelers, 4 travelers, 5 travelers who are visiting. Can you send us? And they want to visit. They should be a educational trip. This should be a leisure trip. ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि उनको किस तरह की ट्रिप चाहिए। तो वो उस हिसाब से आपको आइटनरी सेंड करेंगे और अपना कोटेशन देंगे। फिर आप उनको बताना कि हम बिजनेस हैं and we want extra discount so that we can send you more people in future as well. तो फिर वो आपको थोड़ा सा और 10-20% का जो उनका लाइबल होगा वो डिस्काउंट दे देंगे। अब आपको क्या करना है, यू आर रेडी विद द पैकेज। नाउ आप उस पैकेज के साथ रेडी हो, पर पर्सन की कॉस्टिंग आप निकाल सकते हो, पर पर्सन का ही हिसाब वो लोग देंगे, और पर पर्सन का ही हिसाब आपने वीजा का और फ्लाइट का निकाला है। मान लीजिए आपका सारा एस्टिमेट निकालने के बाद इट बिकम्स समवेयर अराउंड 65 to 70,000 रुपीज पर पर्सन। इसी के आसपास आएगा, क्योंकि फ्लाइट टिकट्स हो गई, प्लस आपका उन्होंने जो प्राइसिंग दिया वो हो गया, और वीजा हो गया। तो 65-70,000 का वो आ रहा है प्राइसिंग। उसमें आप अपना मार्जिन रखिए 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग कीजिए। मार्केटिंग इसकी दो तरीके से की जा सकती है। एक सबसे फर्स्ट मार्केटिंग है, जरूरी नहीं है आप कोई ऑफिस लेके ही ये बिजनेस स्टार्ट करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप बिना ऑफिस के भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि जैसे ही आपके पास एक प्राइसिंग आ जाती है पैकेजेस वाली, क्योंकि देखिए आपको ये समझना है कि आपके एरिया में कितने लोग जाते हैं ऐसे हनीमून्स पे, एजुकेशनल ट्रिप्स पे या घूमने। पहले तो आपको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। अगर ऐसे लोग, आपको पता है कि देयर इज गुड अमाउंट ऑफ पीपल हु आर विजिटिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिंगापुर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, अगर देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलर्स हु आर विजिटिंग अब्रॉड, तो उस कंडीशन में आपको वहां पे ट्रैवल पैकेज का काम करना चाहिए।
लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि नहीं, हमारे नियर बाय अराउंड पीपल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग अब्रॉड, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, खाली सिंगापुर के वीजा के लिए वीजा इशू करना है शॉर्ट मार्जिन के ऊपर। यहां से आप 6,000 में 7,000 में बेचना स्टार्ट कर दीजिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट योर गुडविल। जहां 10 से 15 हजार में बिक रहा है, आप वहां उसे 6 से 7 हजार रुपए में बेचना शुरू करिए। गेट योर वीजा इन 6,000 फॉर सिंगापुर, इतना भी लिखोगे तो भी आएगा। तो आप अपने लोकल एरिया में उसकी मार्केटिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ कर सकते हो, बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर सकते हो, आप अपने इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आप अपने फेसबुक चैनल्स पे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। रही बात अगर आप ऑफिस स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ऑफिस स्टेज में बिल्कुल भी मत स्टार्ट करना, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा आपको ऑफिस। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करना है, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना है। और उसके अलावा आपको अगर अच्छी नॉलेज है लोकल मार्केटिंग की, तो थोड़े बहुत आप पैम्पलेट्स में खर्चा कर सकते हो। पैम्पलेट्स हो गया, फोटो, ये क्या बोलते हैं, जो पोस्टर्स हो गए, फ्लेक्सेस हो गए, इनमें आप, क्योंकि देखिए आप कहीं पे भी ऑफिस लेते हो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, एडवांस रेंट देना पड़ेगा, फर्नीचर, ये। तो व्हाई टू स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी व्हेन यू डोंट नो दैट इट विल गिव यू सम एक्सपोजर और नॉट, रेदर और देन। आजकल वैसे भी ऑनलाइन ही का ही ज्यादा ट्रेंड है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आजकल बेसिकली ऑनलाइन का ही, अगर आपको ऑनलाइन की नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंड होना बेसिकली जरूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन से ही काम आएगा। आपके लोकल एरिया में अगर आप हनीमून पैकेजेस बेचो ना सिंगापुर के, आप करो पोस्टर, आप फ्लेक्सेस लगाओ अपने जो मेजर जो मेजर स्पॉट्स हैं आपके सिटी के, वहां पे फ्लेक्सेस लगवाओ, वहां पे जो भी आपके पास अवेलेबल मोड है। कितना खर्चा हो जाएगा, 3,000 4,000, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा। अब 3,000 4,000 में आप पूरे आपके उसमें हनीमून पैकेज, 2 कॉल्स भी अगर आपको निकल के आती हैं तो भी आपका निकल गया, आपका मार्जिन तो निकल गया ना वहां से। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि आपके वहां पे बेसिकली जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो एक्चुअली में जा रहे हैं, अगर विजिट कर रहे हैं अब्रॉड ट्रैवल के लिए कि नहीं, और अगर कर रहे हैं तो फिर आप उनमें बेसिकली ट्रैवल पैकेजेस का काम करो। और अगर नहीं कर रहे हैं तो खाली वीजा आप ऑनलाइन बेचना शुरू करो, फेसबुक चैनल्स पे अपने पे लिखना शुरू करो, अपने इंस्टाग्राम पे लिखना शुरू करो। सिंगापुर की पोस्टर्स तो यार कैनवा वगैरह पे फ्री में बनाओ ना, कैनवा वगैरह पे फ्री में पोस्टर्स बनाओ, सिंगापुर की अच्छी अच्छी फोटोज लगाओ, और उसके बाद उस पर रेट लिखो कि गेट योर वीजा इन। और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लोग गारंटी ले रहे हैं कि सिंगापुर का वीजा 14 अगस्त को आप इशू करते हो तो 24 अगस्त से पहले पहले दे देंगे। तो इसका मतलब आप लोग भी इशू कर सकते हो, गेट योर वीजा इन 10 डेज, गेट योर सिंगापुर वीजा इन 10 डेज। बिकॉज इनकी एक पॉलिसी है, अगर आप देखोगे, कि गेट योर वीजा रिस्पॉन्स और टाइम और फ्री। अगर 24 अगस्त तक वैसे भी अगर आपका वीजा नहीं आता है, 25 अगस्त हो जाती है, तो 100% रिफंड भी मिलेगा, वीजा भी मिलेगा। तो आपको तो यहाँ फायदा हो गया, कस्टमर को तो आप कुछ भी बोल सकते हो, चलो सर एक दिन लेट हो गया, आपको तो वीजा फ्री में पड़ गया। करेक्ट और नॉट? तो आप ऐसे करके मार्केटिंग का यूज कीजिए, शुरू में इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अब आपको मैं क्लासेस दे रहा हूं, आप इसको ये मत समझिए कि मैं, चलो ठीक है, जब मेरे को सब कुछ आ जाएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। आप तब तक सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है, फिर दोबारा से रिव्यू करना पड़ जाएगा। तो बेसिकली जितना सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करना शुरू करो। सबसे पहले दोनों चीजों को, जो भी मैंने आज सिखाई हैं, इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करो, कैनवा वगैरह पे पोस्टर्स बनाओ और उसको रखो। सबसे पहला काम तो ये करो कि खाली वीजा बेचने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन, जब आपको वहां से रिस्पॉन्सेज नहीं आए, तो थोड़ा सा 1-2 हज़ार रुपए आप अपनी मार्केटिंग में लगाओ इस चीज की। आप जरूरी नहीं है कोई कंपनी को रजिस्टर कराओ, एक प्रोपराइटरशिप पे भी काम कर सकते हो आप, ठीक है। आप अपना नाम जो भी है, दुग्गल, जैसे मयंक जी का दुग्गल सरनेम है तो दुग्गल वीजा सर्विसेज नाम दे दीजिए। उसको जरूरी नहीं है, जब आप सर्विसेज दे रहे हो, दैट दैट मैटर्स, ठीक है। सो बेसिकली आज की क्लास कंप्लीट हो चुका है हमारा सिंगापुर। और
आई गेस अभी कोई क्वेश्चन भी नहीं होगी आप लोगों को। और एक और चीज, आप लोग अगर मुझसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं क्लासेस की, तो मेक श्योर यू आर रेगुलर। देखिए कभी हो सकता है कि आप एक दिन कोई इमरजेंसी आ गई आप लोगों को, तो वो चीज समझ में आती है, लेकिन आप आ ही नहीं रहे हो और उसके बाद फिर मेरे को बोलते हो सर रिकॉर्डिंग सप्लाई कर दें, तो नहीं होगी आपको सप्लाई। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि कंडीशंस होती हैं, सबके साथ होती हैं, आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकते हैं कि आप बीमार हो गए, कुछ और हो गया, या फिर कुछ जरूरी काम आ गया, तो उस कंडीशन में आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग ले लीजिए, बट आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेंगी। करेक्ट? चलिए, नो क्वेश्चन टिल नाउ। कल से हम नया कंट्री शुरू करेंगे एंड दैट इज दुबई। कल हम दुबई स्टार्ट करेंगे, और मेक श्योर आप सिंगापुर का आज से ही या कल से ही, जैसे भी हो आपको टाइम मिले, आप अपना वर्किंग स्टार्ट करें। आई रेगुलरली आस्किंग यू कि क्या अपडेट है, आप लोगों को क्या मिला है क्या नहीं मिला है। और अगर कुछ डाउट्स आते हैं वीजा, तो मैं हूं ना आपके पास। तो फिर आपको भी तो ये है कि आपके पीछे सपोर्ट है, और इस चीज में सपोर्ट चाहिए होता है बस। आपको सपोर्ट मिल रहा है तो व्हाई नॉट यू आर गोइंग फॉर इट। ओके, सो we should wind up the classes. Thank you very much for joining. We'll see you tomorrow. Yeah, thank you. Thank you so much. Uh, Thank you. you.